अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। अफगानिस्तान के सीनियर रहनुमा और दोहा में सियासी ऑफिस के सरबराह सुहेल शाहीन का बयान। कहा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है मौजूद। फ्रांस हुकूमत ने 14 जुलाई को कौमी दिन के मौके पर आम तातील पर मुल्क भर में आतिशबाजी रखने, फरोख्त करने और आतिशबाजी के सामान की नकल हमल पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका सदर जो बाइडेन नेटो की सरबराही इजलास शुरू होने से पहले बरतानिया पहुंचे। श्रीलंका की हुकूमत ने गुज़िश्ता साल हंगामों में सदारती महल से चोरी किए गए तारीखी सामान वापस करने पर माफ़ी का किया ऐलान। सऊदी अरब के शुमाल में वाक़ कमिश्नरी अलक़रियात में 2 कमसिन भाई वसीम और हानी अपने वालिद के सामने सैलाबी पानी में डूबकर हलाक। कांग्रेस ने कहा, पार्टी रहनुमा राहुल गांधी मुल्क के लोगों की खुशी, अमन, बहबूद और जमहूरियत की हिफाजत के लिए बेखौफ होकर लड़ते हैं। मुल्क भर में जारी बारिशों के बाद कोहराम मच गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना कर दिया मुहाल। कौमी दारुल हुकूमत में आज 10 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अब खबरें तफसील से। अफगान तालिबान के सीनियर रहनुमा और दोहा में सियासी ऑफिस के सरबराह सुहेल शाहीन ने कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद है। अरब न्यूज़ के प्रोग्राम फ्रेंकली स्पीकिंग में बात करते हुए सुहेल शाहीन ने इस सवाल पर कि पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि अफगान हुकूमत TTP को रोकने में संजीदा नहीं है के जवाब में कहा, TTP अफगानिस्तान में नहीं और हम पहले भी कह चुके हैं कि किसी को भी अफगानिस्तान की सरजमीन में इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में हैं तो पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई ये उनकी जिम्मेदारी है, ना कि हमारी। एंकर पर्सन कैटी जेसन ने इस सवाल पर क्या आप ड्यूरेंट लाइन को अपने और पाकिस्तान के दरमियान बैनुल अक़वामी बॉर्डर के तौर पर तस्लीम करते हैं? सीनियर तालिबान रहनुमा का कहना था कि इसे बॉर्डर नहीं ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ये तो कहना ही इसकी हैसियत बताती है के लिए ये काफ़ी है। उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताल्लुकात के हवाले से कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बल्कि ममालिक के साथ ताल्लुकात है और हमारी पॉलिसी पुरअमन तरीके से रहने और हमसाया ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात रखने की है। ये हमारी पॉलिसी है और अब ये उन पर मुनहसिर है। आप उनसे पूछें कि उनकी पॉलिसी क्या है। अगर वो भी यही चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। ये खित्ते, हमसाया ममालिक, अफगानिस्तान और हम सब के लिए अच्छा है। ईरान के साथ रवा साल मई में होने वाले सरहदी झड़पों के हवाले से सुहेल शाहीन ने कहा कि हमारा ईरान के साथ 51 बरस कबल एक मुआहदा हुआ था और उसके मुताबिक ईरान को 26 क्यूबिक मीटर्स पानी मिलना था, लेकिन उन्होंने इससे ज़्यादा हासिल किया क्योंकि उस वक्त अफ़गानिस्तान में जंगी सूरत हाल थी। मेरे ख्याल में ये एक तकनीकी मसाला है और तकनीकी टीमें और माहदे की बुनियाद पर हल हो सकता है। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियाँ भी हैं। पानी की सतह अब वो नहीं रही जो आज से 50-51 साल कबल थी। न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सूरत हाल तब्दील हो रही है, पानी की सतह कम हो रही है, तो मुआहिदा और मौसमियाती तब्दीलियों के हिसाब से वो अपने हिस्से का पानी ले सकते हैं। मेरे ख्याल में एक ईरानी वक्त मुआहिदे के मुताबिक मसाले को हल करने के लिए हमारे लोगों से बात कर रहा है। उनसे पूछा गया कि सरहद पर जो सूरत हाल बनी हुई है क्या वो ईरान के सामने खड़े हो सकते हैं? सुहेल शाहीन ने जवाब दिया कि हम अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हम किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि किसी की हक तलफी नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम अपने तमाम पड़ोसियों के साथ पुरअमन बक़ाए बहामी के साथ रहना चाहते हैं। सीनियर तालिबान रहनुमा ने कहा कि हमारी तवज्जो इस वक्त अफगान की तामीर नौ पर है और इसके लिए हम अपनी पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और अगर कहीं कोई मसला है तो हम उसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं, पुरअमन हल चाहते हैं और यही हमारे और उनके लिए बेहतर है। सुहेल शाहीन से पूछा गया कि अगर उनको ईरान से जंग करना पड़ा तो क्या उनके पास दिफा कर सकते हैं? गुज़िश्ता 20 साल कबल इस बात का सबूत है कि हम अपना दफा करना जानते हैं। एंकर पर्सन कैटी जेसन ने सवाल किया कि दोहा मुआहदे में तालिबान ने कहा था कि वो अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। क्या ये कमिटमेंट है या सिर्फ मगरब के लिए ज़ुबानी जमा खर्च? इस पर तालिबान रहनुमा ने कहा कि ये कमिटमेंट है और इस पर हम खड़े हैं। ये एक जानता है कि और ये सारे लोग जानते हैं कि ये हमारी सरकारी पॉलिसी और हम दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं देते। उन्होंने कहा कि हज़ारों मील दूर किसी डेस्क के पीछे बैठकर अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी के ट्रेनिंग कैंपों के बारे में लिखने वालों को क्या हमें दिखा सकते हैं कि ये कैंप कहाँ है? ये ज़मीनी हकीकत पर मबनी नहीं है बल्कि सियासी मकासद के लिए हमारी हुकूमत के खिलाफ बातें की जाती है। सुहेल शाहीन ने कहा
कि अगर ये बात करते हैं तो साबित करें और अपनी वफूद अफगानिस्तान भेजें और शवाहिद लाएं बसूरत देकर ये अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बड़े इदारे के साख पर भी सवाल है। मुआशी तौर पर हम दुनिया के तमाम मुल्कों से मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं। चूँकि हम मुल्क की बहाली और तामीर नौ चाहते हैं, इसलिए सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। सवाल पूछा गया कि एक वक्त था कि आप अमेरिका से लड़ रहे थे और अब आप अमेरिका से ताउन कर रहे हैं, तो अपने जंगजुओं के सामने कैसे इसकी तवजीह करते हैं। सोहेल शाहीन ने जवाब दिया कि दो मरहला थे। पहले मरहले में अपने मुल्क को अमरीकी तसल्लुस से आज़ाद कराना चाहते थे, तो उस वक्त लड़ें। अब बहाली और तामीर नौ का मरहला है, तो इस मरहले में अमरीका समेत तमाम दुनिया से सरमायाकारी और ताउन को खुशामदीद कहते हैं। पोस्ट की काश्त के खात्मे के हवाले से सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों में मगरबी ममालिक अरबों डॉलर खर्च कर भी इसका खात्मा न कर सके, मगर हमने एक फतवे के ज़रिए इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। सोहेल शाहीन से पूछा गया कि अफगानिस्तान के 97% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, औरतों और लड़कियों पर पाबंदियां हैं, दहशत गर्दी का खतरा है और बैनुल अक़वामी इमदाद रोक दी गई है, तो अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत में कैसे तरक्की करेगा। उन्होंने जवाब दिया कि हमें जिस गुर्बत का सामना है वो हमें गुज़िश्ता 20 साल से बरसर इक़्तिदार रहने वाली हुकूमत से वर्षे में मिली है। गैर मुल्की फोर्सेस अफगानिस्तान में मौजूद थी। वो कहती थी कि उन्होंने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन वो डॉलर कुछ वार लॉर्ड्स के जेब में चले गए। आम लोग इसी वक्त से गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हमने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने पाबंदियां लगा दी और गुर्बत में मज़ीद इजाफा हुआ। तो ज़्यादा जिम्मेदार उन पर, यानी ज़्यादा जो जिम्मेदारी है उन लोगों पर आयद होती है जिन्होंने पाबंदियाँ लगाई और वार लॉर्ड्स की हिमायत की, जो उनकी इत्तेहादी थे और आम लोगों के लिए काम नहीं कर रहे थे। बदकिस्मती से गुर्बत है, लेकिन हम इनसे निमटने की कोशिश कर रहे हैं। सोहेल शाहीन का कहना था कि हम अपने पैसों से सड़कों की तामीर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के प्रोग्राम फ्रैंकली स्पीकिंग में उनका ये भी कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और नहीं मुसलमान ममालिक उनके साथ ताउन और ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, तो क्या वो कम अज़ कम अफ़गानिस्तान के तमाम धरों को हुकूमत में शामिल करेंगे। तालिबान रहनुमा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक का हमें तस्लीम न करना ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स एक सियासी मामला है। हमारे सरहदें हैं, हमारा पूरा मुल्क पर कंट्रोल है, हम अपने लोगों का दिफा कर सकते हैं और हमें उनकी हिमायत हासिल है। ये गुज़िश्ता 20 सालों में साबित हो चुका है। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी और ख़वातीन को काम की इजाज़त न देने के हवाले से सोहेल शाहीन का कहना था कि पहले तो मैं कहूँगा कि हम पर पाबंदियाँ लगाई गई है। जब यूनिवर्सिटियाँ और सेकेंडरी स्कूल खुले थे तो ख़वातीन काम कर रही थी, तो हमें तस्लीम नहीं किया गया। हत्ता कि अभी भी 1.5 लाख ख़वातीन डॉक्टर्स और नर्सेज सेहत आम्मा की वजारत में काम कर रही हैं और कोई इसका जिक्र नहीं करता। मज़ीद कई वजारतों में ख़वातीन काम कर रही हैं, जैसा कि वजारत तालीम में हज़ारों ख़वातीन टीचर्स का काम कर रही हैं, लेकिन हम पर ये पाबंदियाँ शुरू से लगा दी गई जो अभी तक लगी हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सियासी बुनियादों पर लगाई गई पाबंदियाँ हैं। शुरू में उन्होंने इस मसले को बुनियाद नहीं बनाया था, लेकिन अब वो बना रहे हैं। वो आगाज़ से ही हुकूमत के साथ मिलकर काम करने और मसले को हल करने के बजाय इसको गैर अहम बना रहे हैं। इस सवाल पर कि लड़कियों और ख़वातीन को अब स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ में क्यों नहीं भेजा जा रहा है, उन्होंने कहा कि मेडिकल स्कूल खुले हैं और दीगर स्कूलों की बात की जाए तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जो लड़कियों को इस्लामी रवायात के मुताबिक स्कूल का माहौल फराहम करने के लिए काम कर रही है। सोहेल शाहीन ने बरतानवी शहजादे हैरी की अपनी खुदनोश्त में इस दावे की कि उन्होंने अफगानिस्तान में 2012 से 13 के दौरान बतौर को हेलीकॉप्टर पायलट और गन्स के 25 अफगानियों को हलाक किया था और उन्हें इस हवाले से न तो कोई इत्मीनान है और न ही शर्म के हवाले से कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। जमहूरियत पसंद होने के दावेदार हैं, इंसानी हुकूक के जिम्मेदार है और चैंपियन बनते हैं, लेकिन हकीकत में करते हैं। Famine in a quarter of a century, the repression of women and girls, growing terror threats and falling international donor funding. Frankly speaking, how can Afghanistan ever flourish under the rule of the Taliban? Yes, first of all, I would like to say the poverty that we have today, we have inherited from the past regime of 20 years, where the foreign forces had presence in Afghanistan, had occupied our country, and they are claiming that they have spent $1 billion dollars, but those dollars went to the private pockets of some warlords. The common people, they were living under the line of poverty that we have inherited. Secondly, as we took over in power in Kabul, they imposed a sanction
That deteriorated the poverty. So the responsibility is more with those who impose the sanction and who favored only the warlords who were their allies in the government. They were not working for the common people. So we have this poverty, unfortunately. But we are working to tackle this issue, and we have some big projects like Koshtepe project, road construction, according to our internal revenue. Well, you say I'm sorry, I'm going to interrupt you here, because you're saying that you're inheriting power from the previous regime. That simply isn't true. You overthrew the legitimate government of poverty. Afghanistan. I mean, we inherited poverty from the past. Of course, we took over, but we inherited poverty. Okay, but let's talk about the current scenario today, because as it stands, the United Nations does not recognize the Taliban as a legitimate government, nor do even any Muslim countries want any ties with you. There's no signs this is going to change. Now, clearly the Taliban is not going to step down, but can you at least consider a government that is inclusive of all Afghani ethnicities and factions? The UN and other countries do not recognize us. It is more politically motivated rather than based on the ground realities in Afghanistan. We have all the borders. We have control all over the country. We are able to defend our people and country. We have the support of the people. It was proved in the past 20 years. You have the support, you're saying you have the support of the people today. You're saying that the United Nations don't recognize you due to your politics. Well, let's talk about some of that, because even politics aside, there is a very clear reason why governments around the world do not want ties with you. If we look at politics aside, a lot of attention has been given to your new repressive rules against women and girls. You currently ban girls over the age of 12 from attending schools or universities. You now ban most women from attending workplaces. They can no longer even work at NGOs. Indeed, you ban women from most public places. Why on earth would you treat women this way? First of all, the sanctions were imposed. We were not recognized when the universities were open, when the secondary schools were open, when the women were working. Even now, about 150,000 women and doctors, nurses are working with the Ministry of Public Health. No one mentioned that. And also in some ministries, the Ministry of Education, tens of thousands of female teachers are working. But these sanctions were imposed at the beginning on us and still continuing. That is why we say they are more politically motivated. So they have this pretext now, but at the beginning that was not the case. Still, they imposed a sanction on us. From the beginning, they were working and following a policy of marginalizing the government rather than to continue to engagement with the government in order to resolve the issue that we are facing. We are both have the issues to be resolved through engagement, but they didn't follow that. Instead, they focused on marginalizing the government. So you say the sanctions were already in place when you were allowing women and girls to attend secondary education and university. Why are you treating women this way today, though? Why do you currently not allow them to attend secondary school or university? First, in Afghanistan, still there are secondary schools where modern education and religious education or yes, but I'm not talking about religious. I'm not talking about religious education. I'm talking about the everyday girl in Afghanistan who wants to be able to attend school as she did before you regained power. I'm talking about the everyday woman who wants to study to be able to become a doctor or a scientist that would further your nation. Why are they not allowed to attend education today? About schools, medical schools, they are open.
nursing school, they are open, institute are open. Some of the facts, ground realities are not mentioned in the media. They are open. Even the doctors were not allowed in the past government to have specialization in all fields. Only they were allowed to have specialization. Okay, so are you saying if these schools are open, you're saying the media has it wrong? You are saying that all schools and all university education societies are open, that women and girls can attend education as they did 5 years ago? Yes, of course, they are the doctors are allowed to have specialization in other fields, cardiology and other fields that they have, and they are very happy with that. And about education, no one from our side has said that we deny girls access to education, but only said we were working to provide a proper environment, Islamic environment, and that they can keep their education, and the committee is working on that. So no one has denied, but it is shown. No one has denied. I think the entire world has denied, because I think to most of us, I know you've previously spoken about this. You've previously said it's an internal. We have not said. So you say the media has it wrong. You say girls are attending school and university as normal. I simply disagree with that. I think most of the international community would disagree with that as well. It seems to me that the Taliban have been using religion as a justification to not educate your women, to not allow them to take a proactive place in the workplace and the economy. And the real fact is that every single Muslim country around the world treats its women and girls better than you do. In the Gulf and this part of the world, we have plenty of women in ministries, as ambassadors as well. Even in countries like Iran, where women are protesting, they are still allowed to attend school. They are still allowed to work. We've seen Muslim scholars and clerics around the world slam you for this decision. Are you saying that all of them are wrong? I didn't say that all universities are open. I only said that medical institutes, they are open, and the female students are receiving education in the medical field. I said I want to make this clear. So, and secondly, a committee is set up, and it is working to provide a conducive environment Islamic. फ्रांस ने 14 जुलाई को कौमी दिन के मौके पर आम तातील पर मुल्क भर में आतिशबाजी रखने, फरोख्त करने और आतिशबाजी के सामान की नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस पुलिस के हाथों 17 साल नौजवान की हलाकत के बाद मुल्क भर में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरे में पटाखों के इस्तेमाल के बाद ये कदम उठाया गया है। अल्जायरी नौजवान की हलाकत के बाद फैलने वाली बदनुमानी के बाद इतवार की रोज़ सरकारी जजीरे में यह हुक्मनामे शाये किया गया। फ्रांस में 27 जून को पेरिस के नवाह में पुलिस अफसर ने ट्रेनिंग चेकिंग के दौरान गाड़ी न रोकने पर एक 17 साल नौजवान को मुबैना तौर पर गोली मारकर हलाक कर दिया था। वाज़ेह है कि फ्रांस में जारी फसादात के दौरान आतिशबाजी के सामान का इस्तेमाल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। कौमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों के दौरान अमन आमा बरकरार रखने के लिए 15 जुलाई तक तमाम किस्म की आतिशबाजी का सामान रखने की फ़रोख्त करने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने या इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि यह पाबंदी पेशावर अफराद या म्यूनसिपलिटी इदारों के लिए नहीं है जो फ्रांस के ख़ास दिन के तक़रीबात के लिए रवायती आतिशबाजी का एहतमाम कर रहे हैं। फ्रांस के वज़ीर आज़म एलिज़ाबेथ बोरन ने गुज़िश्ता रोज़ हफ्ते को रोज़नामा ली प्रेसन को बताया कि हुकूमत कौमी तातील के दौरान फ्रांस के अवाम की हिफाजत के पेश नज़र इस इक़दाम अपना रही है। फ्रांस के कौमी दिन बास्टिल डे के सालाना तक़रीबात के मौके पर मुल्क भर में आतिशबाजी की नुमाइश की जाती है। दूसरी जानिब भी यही आतिशबाजी मुल्क में फसादात भड़काने में काम आ रही है। अलजाइर नज़ाद नौजवान नाहिल एम के पेरिस के मुज़ाफ़ाती इलाके में पुलिस के हाथों हलाकत ने 2005 के बाद से फ्रांस की बदतरीन शहरी तशद्दुद समझा जा रहा है। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक नाहिल की हलाकत के बाद से जारी फसादात में 3700 से ज़्यादा मुजाहिरीन को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनमें से 1160 कम उम्र अफराद भी शामिल है।
अमरीकी सदर जो बाइडेन नेटो की सरबराही इजलास शुरू होने से पहले बरतानिया पहुंच गए हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक मंगल को लिथुआनिया में होने वाले नेटो की सरबराही इजलास का मकसद रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के साथ यकजहती का इजहार करना है, जबकि दूसरी जानिब कीव को नेटो में शामिल करने के हवाले से कोई अंदिया नहीं दिया गया है। अमरीकी टेलीविजन CNN को दिए गए इंटरव्यू में सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के नेटो का रुकन बनने के मामले पर एहतियात बरतने का मशवरा देते हुए कहा कि नेटो के साथ बाहमी दफाई मुआहदे की वजह से इत्तेहादी ममालिक की रूस के साथ जंग छिड़ सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं नहीं समझता कि इस मौके पर जंग के दौरान नेटो में इस बारे में इत्तफाक राय पाई जाती है कि यूक्रेन को नेटो फैमिली में शामिल करना है या नहीं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करके मगरबी ममालिक की जानिब से पैगाम होगा कि मगरबी दफाई इत्तेहाद मॉस्को से खौफजदा नहीं है। Mr. President, an honor to have you on the program. Good to be with you. Thanks for having me. When you go to the NATO summit, the big strategic issue is that Ukraine wants membership in NATO. Should it get membership in NATO? I don't think it's ready for membership in NATO, but here's the deal. I spent, as you know, a great deal of time trying to hold NATO together because I believe Putin has had an overwhelming objective from the time he launched 185,000 troops in Ukraine, and that was to break NATO. He was confident, in my view, and many of the intelligence community, he was confident he could break NATO. So holding NATO together is really critical. I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into the NATO family now, at this moment, in the middle of a war. For example, if you did that, then, you know, I mean what I say, we're determined to commit every inch of territory that is NATO territory. It's a commitment that we've all made no matter what. If the war is going on, then we're all in a war. You know, we're in war with Russia if that were the case. So I think we have to lay out a path, for the rational path, for for Ukraine to be able to qualify to get into NATO. And we have, when the very first time I met with Putin 2 years ago in Geneva, and he said, I want commitments on no Ukraine in NATO. I said, we're not going to do that because it's an open door policy. We're not going to shut anybody out. NATO is a process that takes some time to meet all the qualifications, and from democratization to a whole range of other issues. So in the meantime, though, I've spoken with Zelensky at length about this. And one of the things I indicated is the United States would be ready to provide, while the process was going on, and it's going to take a while that process was going on, to provide security a la the security we provide for Israel, providing the weaponry, the need, the capacity to defend themselves if there is an agreement, if there is a ceasefire, if there is a peace agreement. And so I think we can work it out, but I think it's premature to call for a vote, in now, because there's other qualifications that need to be met, including democratization and some of those issues. The short-term issue is at the NATO summit is Sweden. Do you think, are you optimistic that Sweden will be invited to join NATO relatively soon? I am. I've met recently with the Swedish Prime Minister here. Sweden has the same value set that we have in NATO, has a small nation, but has the capacity to defend itself, they know how to fight, and I think they should be a member of NATO. You know better than anyone, the holdup is Turkey. Turkey and Sweden is making adjustments in their law to relate to whether or not have people burning the Quran. Well, they aren't Swedes that are burning the Quran. They are immigrants who are burning the Quran. And that gives an excuse or puts Erdogan in a tough spot at home. And so they're moving to stop that, number one. Number two, Turkey is looking for modernization of F-16 aircraft. And Mitsotakis in Greece is also looking for some help. And so what I'm trying to, quite frankly, put together is a little bit of a consortium here where we're strengthening NATO in terms of the military capacity of both
Greece as well as Turkey, and allow Sweden to come in. But it's in play. It's not done. But you're hopeful. I'm hopeful. Matter of fact, I'm optimistic. You have news. The news is that the administration is going to provide cluster munitions to the Ukrainians. These are weapons that 100 nations ban, including some of our closest NATO allies. When there was news that the Russians might be using it, admittedly against civilians, your then press secretary said this might constitute war crimes. What made you change your mind and decide to give them these weapons? Two things, Fareed, and it was a very difficult decision on my part. And by the way, I discussed this with our allies, discussed this with our friends up on the Hill, and we're in a situation where Ukraine continues to be brutally attacked across the board by munitions, by these cluster munitions that have dud rates that are very, very low, very high, that are dangerous to civilians, number one. Number two, the Ukrainians are running out of ammunition. The ammunition that they call them 155 millimeter weapons. This is a war relating to munitions, and they're running out of that ammunition, and we're low on it. And so what I finally did, took the recommendation of the Defense Department. श्रीलंका की हुकूमत ने गुज़िश्ता साल हंगामों में सदारती महल से चोरी किए गए तारीख़ी सामान वापस करने पर माफ़ी का ऐलान किया है। गैर मिल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल जुलाई में श्रीलंका में बदतरीन मुआशी बहरान के बाद शुरू होने वाले हंगामों के दौरान हज़ारों मुजाहिरीन सदारती महल में दाखिल हो गए थे और साबिक़ सदर गोताबाया राजापक्से मुल्क से फ़रार हो गए थे। कल यानी इतवार को श्रीलंका के मौजूदा सदर रानिल विक्रमासिंघे के दफ्तर से जारी बयान में 1 महीने की माफ़ी के ऐलान के साथ कहा गया है कि बेश कीमत नवादरात और साबिक़ सदर और गवर्नर से मुंसलिक शील्ड्स गुमशुदा हैं। हुक्काम ने 5 तारीखी शील्ड्स की तस्वीर जारी की हैं, जिनमें से 1622 में तैनात होने वाले एक पुर्तगाली गवर्नर की शील्ड भी शामिल हैं। दीगर शील्ड्स में 19वीं और 20वीं सदी में बरतानवी राज के शील्ड्स की तस्वीर भी हैं। जब मुजाहिरीन ने सदारती महल पर चढ़ाई की तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उन नवादरात के साथ सेल्फियाँ सामने आई। गोताबाया राजापक्से महल के पिछले रास्ते से फरार हो गए। मुजाहिरीन की तरफ से उन पर करप्शन और माली बद इंतज़ामी का इल्ज़ाम था। बाद अज़ा पुलिस ने सोशल मीडिया पर सदारती बेयर की मग, राजापक्से की झंडू और बेड शीट की तस्वीर पोस्ट करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया था। ताहम कुछ मुजाहिरीन ने राजापक्से के कमरे से मिलने वाले $6000 पुलिस के हवाले किए थे और अदालत ने सवाल उठाया था कि साबिक़ सदर के पास ये रकम कहां से आई। गोताबाया राजापक्से इब्तदा में सिंगापुर और थाईलैंड में रहे, लेकिन बाद में सख्त सिक्योरिटी के बाद वतन वापस आ गए। मौजूदा सदर ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की, टैक्स को दुगुना करने के बाद ज़रूरी अशिया की सप्लाई को बहाल किया और महंगाई में इजाफा किया। started on will result in a much freer economy, further liberalization. Our final aim is a highly competitive economy, a green economy and a digital economy. The initial steps have been taken in regard to all these 3 objectives. We have already decided to divest a large number of state-owned enterprises. We are focusing on a number of new initiatives to make Sri Lanka a regional logistics center, to increase its tourism and to aim at upmarket tourism, looking at the scenic beauty and the other special opportunities available in Sri Lanka. The digital economy will also pick up speed in the coming few years. These are but some of the initiatives that we have started, and I would like all of you to consider what Sri Lanka has done and examine the opportunities and the potentials that सऊदी महकमे पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वजारत दाखिला का ज़ैली अदारा है, कवानीन के मुताबिक ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के अकाम खरूज वादुवा और खुज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। ममलिकत में रहायश पसीद गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फ़ाइल एग्जिट, जिसे अरबी में खरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने वाले के लिए खरूज वादुवा लेना होता है। खरूज वादुवा के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया कि दिनों के हिसाब से खरूज वादुवा जारी किया गया क्योंकि अकामे की मुद्दत 6 माह से कम थी। मालूम यह करना
नए खरूज वादबा के वक्त का तयन यानी काउंटडाउन कब होगा? सवाल का जवाब में जब आज़ाद का कहना था कि वकामा होल्डर जिनके खरूज वादबा दिनों के हिसाब से जारी किए जाते हैं उनमें वापसी की तारीख दर्ज होती है। इस कैटेगरी के खरूज वादबा के वक्त का तयन यानी काउंटडाउन उसी दिन से शुरू हो जाता है जब वीज़ा जारी किया जाता है। अगर वीज़ा 60 रोज़ का है तो उसका हिसाब उसी दिन से शुरू होगा। खरूज वादबा की दूसरी किस्म माहाना बुनियाद पर जारी होने वाला है। इसकी नौइयत एग्जिट री एंट्री वीज़े की मुद्दत का तयन उस तारीख से किया जाता है जब इकामा होल्डर ममलिकत से निकल जाता है। एयरपोर्ट इमिग्रेशन जब एग्जिट लगाया जाता है तो उसी दिन से खरूज वादबा की मुद्दत की गिनती शुरू हो जाती है। सऊदी अरब के शुमाल में वाक़ई कमिश्नरी अलक़रियात में 2 कमसिन भाई वसीम और हानी अपने वालिद के सामने सैलाबी पानी में डूबकर हलाक हो गए। अल अरबिया नेट के मुताबिक डूबने वाले बच्चों के वालिद बुरका सलामा अल हमलान अशरारी ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ सैर करने के लिए आए थे। दोनों बेटे अलक़रियात रेलवे लाइन के करीब एक गड्ढे में जमा सैलाबी पानी में खेल रहे थे। अचानक हानी और वसीम के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। लोगों को मदद के लिए पुकारते हुए कहा कि मेरे बच्चों को डूबने से बचाओ। फौरी तौर पर वहाँ मौजूद नौजवानों ने मदद की। एक शहरी तलाल अब्दुल्ला ने बताया कि बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की। पानी गहरा और गदला था जिसके बाद तैरने और गोते लगाने में मुश्किल पेश आई। बताया गया कि बच्चे पानी से भरे एक छोटे गड्ढे में खेल रहे थे। इसके बराबर में एक गहरा था जिसमें पैर फिसल जाने पर बच्चे गिर गए। दोनों बच्चे की नाशे नौजवान की मदद से निकाल ली गई। एक बच्चे की उम्र 11 और दूसरे की 15 साल बताई गई है। सऊदी महकमे शहरी दफा ख़राब मौसमी सूरत हाल के बाद शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की फिर अपील की है। أمامكم بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر أنا قناة الإخبارية على مجهودهم على مباشرتهم للموقع. أولا كنا بعد صلاة العصر كشاثين هنا كشاثين وتحدث بعد تقريبا فترة قلنا نبي نمشي بعد وقال لا كل ما نخرها شوي فجأة كذا الرجال ينادي ويشتري لنا يستنجد بينا. جينا على طول انطلقنا. بعد ما جينا قال تكفون عيالي غرقوا. كانوا 2 حدد لنا الموقع هنا. واحد من اخويانا بلغ الباقيين على طول سباحوا. تقريبا قعدنا 25 دقيقة وفقنا الله وطلعنا الأول الحمد لله. طلعنا متوفي وما توفي واسعفناه لعل وعسى أن الله يرد روحه. حنا كنا ما ندري عنه. بعد تقريبا فترة على طول أخويانا طلعوا 20 دقيقة كذا وعسى الله يرحمهم إن شاء الله ويسامحهم وعزانا للمتوفين كلهم. كيف شاهدت موقف الوالد أعانه الله؟ الوالد عسى الله إن شاء الله يصبره ويكون بعونه. كان يعني مرتبك وضعه ما يعرف يسبح واستنجد بينا على طول. حنا جينا عنده. جميل الله يعطيكم العافية. شباب كفو والله يرحمهم إن شاء الله. اللهم آمين. نستضيف معنا أحد الشباب اللي يعني ساعد في خروج أو إنقاذ الأطفال في حينها وخروجهم من الماء وتوفاهم الله. تفضل معي هنا تعرف عليك أولا. طلال عبد الله الشراري. كيف دخلت في المويه؟ كيف سبحت؟ كيف علمني الحادثة بالضبط. أولا الحمد لله على كل حال. حنا كنا أنا وأخويانا مثل ما قال خوينا واستفزع بين الرجال وجينا. حنا كنا أنا والأخ زايد عايد اللغبة والأخ عليان قبلان الشراري وعلى طول قال هنا بالمنطقة هذه وجينا وسبحنا ما ندري وين. कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी रहनुमा राहुल गांधी मुल्क के लोगों की खुशी, अमन, बहबूद और जमहूरियत की हिफाजत के लिए बेखौफ होकर लड़ते हैं। इसके लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ साजिशें करते हैं, लेकिन मुल्क की आवाम फैसिस्ट कुव्वतों की ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सी वेणुगोपाल ने इतवार को जारी एक बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत के सबसे मजबूत और सबसे खुले मुखालिफ हैं। भारत जोड़ो यात्रा की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में तारीखी तकरीर की और मिस्टर मोदी और अडानी ग्रुप के नापाक ताल्लुकात को बेनकाब किया। नतीजे के तौर पर बीजेपी ने उन्हें पार्लियामेंट से नाअहल कराने के लिए अपनी घिनौनी चालें चली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बेखौफी के साथ हुक्मरानी का मुकाबला करने और मुल्क के गरीबों, किसान
किसानों, मजदूरों, नौजवानों और पसमानदा लोगों के मसाइल सुनने के लिए पुरअज़्म हैं। वो पार्लियामेंट के बाहर भी आवाम की आवाज़ है। वो एक ऐसा लीडर है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। इसलिए राहुल गांधी इंतकामी तौर पर पार्लियामेंट की रुकनीत से नाअहली पर नाराज़ हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से अपील करते हैं कि वो बगैर किसी इम्तियाज़ के इंसाफ और आज़ादी के लिए लड़ने वाले क़ुव्वतों के साथ खड़े होकर जमहूरियत के ज़वाल के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। उन्होंने कहा कि एहतजाज के तौर पर कांग्रेस कारकुनान 12 जुलाई बरोज़ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हर रियासत के दारुल हुकूमत में गांधी मुजस्समे के पास खामोश सत्याग्रह का एहतमाम करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी, RSS की जो भी साजिशें हों, कांग्रेस पार्टी सच बोलती रहेगी और मुल्क के लोगों की फलाह बहबूद और जमहूरियत की हिफाजत के लिए लड़ती रहेगी। हिंदुस्तान की अवाम ऐसी फस्ताई ताकतों को ज़्यादा देर तक इक़्तिदार में नहीं रहने देगी। ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് പോലും പിന്നോട്ടേക്ക് വലിക്കില്ല. രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ദൗത്യം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഇത്തരം വിധി കൊണ്ട്, ശിക്ഷ കൊണ്ട്, ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്തല്ലോ 5-6 മാസമായിട്ട്. അദ്ദേഹം മിണ്ടാതെ വീട്ടിലിരുന്നോ പേടിച്ചിട്ട്? നിങ്ങളല്ലേ വിചാരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമായി തിരിച്ചടിയാവുന്നത്? ഇത് കോൺഗ്രസ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവസരങ്ങളാണ് ഓരോന്നും അവരൊന്ന് തരുന്നവര്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അത്ര വിഡ്ഢികളല്ലല്ലോ. കോൺഗ്രസിന് അവസരങ്ങൾ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നവര്. കാരണം ഇത്ര നീതി നിഷേധം രാഹുൽ ഞങ്ങൾ പോവും. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോ, ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യം ആലോചിക്കുക. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എല്ലാം ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണോ വലിയ പ്രശ്നം? ഇതെന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ കേസ്? മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നു കേസ്, പക്ഷെ നിർത്തിവെച്ചല്ലോ. ഇടക്ക് പരാതിക്കാരൻ തന്നെ ഹൈക്കോടതി പോയി നിർത്തിവെപ്പിച്ചല്ലോ കേസ്. പിന്നെ എന്ന് തുടങ്ങിയാണ്? അദാനി മോദി ബന്ധം ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് തുറന്നു കാട്ടിയപ്പോഴാണല്ലോ തുടങ്ങിയത്. ഈ കേസ് ആരംഭിച്ചത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. അദാനിയുടെയും മോഡിയുടെയും ബന്ധം തുറന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ. അദാനി ഇത്രയും ശക്തനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി പരമോന്നത നീതിന്യായ കോടതിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നീതിന്യായത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസമുള്ള പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നീതിന്യായത്തിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുള്ള പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലത്തെ പരമോന്നത നീതിന്യായ കോടതി സുപ്രീം കോടതിയാണ്. സുപ്രീം കോടതി मुल्क भर में जारी बारिशों के बाद कोहराम मच गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कौमी दारुल हुकूमत में आज 10 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश में 15 इमारतें गिर गई। कई अरकान असम्बली के घरों में पानी दाखिल हो गया। दिल्ली के गाजियाबाद में आज स्कूल बंद है। गुरुग्राम में बारिश की वजह से लोगों की हालत दिलगोर हो गई है। उधर उत्तराखंड के कई अजला में महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके पेश नज़र 5 अजला देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल और अधम सिंह नगर में पहले से 12वीं जमात तक के तमाम स्कूल और आंगनबाड़ी मराकज़ बंद कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी और देहरादून में 10 जून, अधम सिंह नगर में 10 और 11 जुलाई, अल्मोड़ा में 10 से 12 जुलाई और नैनीताल में 10 से 13 जुलाई को स्कूल की छुट्टी रहेगी। महकमे मौसमियात ने पीर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में भारी बारिश की पेशगोई की है। 10 से 12 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ मकामात पर बहुत भारी बारिश की तवक्को की गई है। कुगन, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात के अलग थलग मकामात पर अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश जारी रहने की तवक्को है। ताहम इसके बाद इसमें कमी मुतवक्किल है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 रोज़ के दौरान पूरे खित्ते में दरमियानी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। अगले 5 दिनों में कर्नाटक, केरला में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अगले 5 दिनों में मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में बहुत भारी बारिश की पेशगोई की है। ओडिशा में अलग अलग मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि झारखंड में 10-12 जुलाई के दरमियान भारी बारिश होने का इम्कान है। 15 कॉल मिली, ये अब तक मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा एक दिन में हाउस कॉलर्स की कॉल है। 15 कॉल मिली थी, ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जो पुराने घर थे या कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो इसमें ढह गए, इसमें गिरे। ये ऐसा नहीं कि पूरे घर गिर गए, कुछ में जैसे देशबंधु कॉलेज की वॉल गिर गई, कहीं पे कुछ पोर्शन गिरा, कहीं छत गिरी, ऐसे मिक्स है। पर ये अनप्रेसिडेंट था 15 कॉल इन 1 डे ऑफ हाउस कॉलर। देखिए, एक तो इतनी सारी हाउस कॉलर्स की कॉल होती है जो नॉर्मल टाइम में नहीं होती हैं।
दूसरा चैलेंजेस ये भी था, सड़कों पे पानी भरा हुआ था, फायर टेंडर को ले आने में, मैनुवेट करने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ पे गड्ढा है क्या है, तो एक वो चैलेंज होता है। दूसरा क्या होता है, जब आप निकलते हैं, हैवी रेन हो रहा है और आपको उस रेन के अंदर में काम करना पड़ता है, विजिबिलिटी भी कम हो जाती है आपकी रेन की वजह से, और भी तकलीफें होती हैं। और जब बारिश चल रही है और उसी में आपको रेस्क्यू करना है, तो आपको ये भी डर रहता है कि बची हुई बिल्डिंग जो रहेगी वो भी गिर सकती है। तो ये सारे चैलेंज आते हैं। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि पार्टियों को तोड़ने की सियासत बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले वो पार्टियां तोड़ते थे, अब वो पार्टियां लेकर भाग जाते हैं। अपने ही बाला साहब ठाकरे की कायम करदा शिवसेना और अब शरद पवार की क़यादत में एनसीपी के साथ क्या हुआ, इस पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टियों को तोड़ने की सियासत कोई नई बात नहीं है। पहले वो पार्टियां तोड़ते हैं, अब पार्टियां लेकर भाग जाते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शिवसेना यूबीटी के सरबराह ने इस दावे को दोहराया कि जब वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद में थे, पार्टी ने उन्हें बारी बारी 2.5 साल के लिए वजीर आला के ओहदे का यकीन दिलाया था। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह अपना वादा पूरा करते तो आज बीजेपी को वजीर आला मिल जाता। ताहम बीजेपी ने शिवसेना को धोखा दिया, जबकि वो इसके सबसे पुराने साथी थे। नतीजे के तौर पर मिस्टर ठाकरे ने कहा, उन्होंने 2019 के महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के बाद वजीर आला के ओहदे की तकसीम के मामले पर तवील मुद्दती हली बीजेपी के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। प्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, बस जरा बस जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, ऐकलं बाबा, तुझा फोटो पण येणार आहे उद्या, बस आता हा ऐकलं, सगळ्यांनी कव्हर पण केलं, बातमी पण घेतली, त्याचा फोटो काढायला एक चांगला म्हणजे तो शांत बसेल। हा शाबास, हा त्याला पाणी पण द्या थोडं, बरंच। आज खरं म्हणजे ही काही जाहीर सभा नाहीये, आज आहे रविवार। गेल्या बुधवारी साधारणतः दुपारच्या वेळेला संजय देशमुख आणि इथली मंडळी आली होती मातोश्रीला, आणि मी त्यांना म्हटलं मी पोहरादेवीच्या दर्शनाला येतोय। मला म्हणायला हरकत नाही, म्हटलं जाहीर सभा घ्यायची नाहीये, कार्यकर्त्यांशी मला बोलायचंय। आणि संजय मला म्हणाले की बरोबर आहे, पण मला जाहीर सभा तर नंतर एक लागेल। म्हटलं जाहीर सभा तर घ्यायला मी परत येणारच आहे, पण आज जगदंबेचं दर्शन घ्यायला आल्यानंतर तिने जे काही विराट रूप दाखवलेलं आहे, हे बघितल्यानंतर माझी खात्री पटलेली आहे की आंधळ्या निवडणूक आयोगाचे डोळे हे उघडले असतील। आणि तरी देखील त्यांचे डोळे उघडले नाही तर मला वाटतं त्यांनी मिटलेले तसेच ठेवावे, उघडण्याची गरजच नाहीये, कारण यांचे डोळे उघडलेले आहेत। हे जगदंबेचं रूप आहे, शंकराचं तिसरं नेत्र आहे। जाहीर सभेसाठी जरा पाऊस झाल्यानंतर येणारच आहे। आज पोहरादेवीच्या दर्शनाला आलो, जगदंबेचं दर्शन घेतलं, प्रार्थना साहजिकच आहे, आशीर्वाद मागताना काहीतरी आशीर्वाद मागायलाच पाहिजे। मी आशीर्वाद काय मागितला, मी पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ दे म्हणून? अजिबात नाही। मी मागितलं की या देशामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये जे गद्दारांचं आणि लाचारांचं सरकार चाललेलं आहे आणि राजकारण एका खालच्या पातळीवर जात चाललेलं आहे, ही पातळी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला, महाराष्ट्र देश राकट रेषा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा, हा साधू संतांचा महाराष्ट्र, दगडांचा राकट, सगळ्या वीरांचा शूरांचा महाराष्ट्र, त्या महाराष्ट्राची ओळख आज जगामध्ये यांच्यामुळे गद्दारांचा आणि लाचारांचा महाराष्ट्र होतोय, ती आम्ही कदापि होऊ देणार नाही, अजिबात होऊ देणार नाही। आणि आणखीन एक प्रार्थना केली, येता जाताना मी दुतर्फा शेती बघतोय,
आत्ता आत्ता कुठेतरी कोंब फुटतायत, पण अजून पावसाचा पत्ता नाहीये. मी जगदंबेला साकडं घातलं की हे राजकारण्यांमधली गद्दारी सगळी जाऊ दे, पण या गोरगरिबांची कैवारी तूच आहेस, त्याच्यामुळे पाऊस पाणी व्यवस्थित होऊ दे, माझा शेतकरी दादा हा सुखामध्ये नांदू दे, ही मी प्रार्थना तुमच्या वतीने मी जगदंबेच्या पायाशी केलेली आहे. अरविंद सावंत बोललेले आहेत, अंबादास दानवे बोललेले आहेत, संजय बोललेले आहेत. फक्त अंबादास तुम्ही बोलताना एक ओळख करून दिली, 200 रुपये हप्ता घेणाऱ्याला मंत्री कोणी केला, पण तो तेव्हा हप्ते घेत होता मला माहिती नव्हतं. नाही तर तुम्ही म्हणाल बघा की हा हप्ते घेणाऱ्याला यांनी मंत्री केला, आपला काय भाजप झालेलं नाही अजून, अजिबात नाहीये. भारतीय जनता पक्षाच्या कोणीतरी टीका केली, म्हटलं टीका कसली करतायत, कोणत्या मुद्द्यावर करतायत तुम्ही टीका? पहिले भाजपामध्ये निष्ठावंत आहेत ते कुठे सतरंजीच्या खाली सापडतात का बघा. कारण भारतीय जनता पक्ष हा आता बाजारबुणग्यांचा पक्ष झालेला आहे. जे खस्ता खात आहेत त्यावेळेला गोपीनाथजी होते, प्रमोद महाजन होते, नितीन गडकरीजी त्यांच्यासोबत होते, कितीतरी इथे आपले भाऊसाहेब फुंडकर होते, अनेक असे लोक होती की ज्यांनी घरदार न पाहता मेहनत करून 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 भारतीय जनता पक्ष रुजवला आणि भारतीय जनता पक्ष वाढवला. आज त्यांच्यासोबत असलेली सगळी जी निष्ठावंत माणसं आहेत, काय त्यांची हालत झालेली आहे. सगळे येत आहेत, बाजार बुणगे येत आहेत आणि नुसतेच येत नाहीत, सगळे भ्रष्टाचाराने आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अफगानिस्तान के सीनियर रहनुमा और दोहा में सियासी ऑफिस के सरबराह सुहेल शाहीन का बयान, कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है मौजूद। फ्रांस हुकूमत ने 14 जुलाई को कौमी दिन के मौके पर आम तातील पर मुल्क भर में आतिशबाजी रखने, फरोख्त करने और आतिशबाजी के सामान की नकल व हमल पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका सदर जो बाइडेन नेटो की सरबराही इजलास शुरू होने से पहले बरतानिया पहुंचे। श्रीलंका की हुकूमत ने गुज़िश्ता साल हंगामों में सदारती महल से चोरी किए गए तारीखी सामान वापस करने पर माफ़ी का किया ऐलान। सऊदी अरब के शुमाल में वाक़ कमिश्नरी अलक़रियात में 2 कमसिन भाई वसीम और हानी अपने वालिद के सामने सैलाबी पानी में डूबकर हलाक। कांग्रेस ने कहा पार्टी रहनुमा राहुल गांधी मुल्क के लोगों की खुशी, अमन, बहबूद और जमहूरियत की हिफाजत के लिए बेखौफ होकर लड़ते हैं। मुल्क भर में जारी बारिशों के बाद कोहराम मच गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना कर दिया मुहाल। कौमी दारुल हुकूमत में आज 10 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसंद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.